guys, what's up? अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो you know me. Welcome back to my channel, and if you're watching me for the first time, then I'm Purvi. Welcome to my channel. I'm so glad that you found me. Please stay connected. Subscribe to my channel and hit the bell icon right next to the subscribe button ताकि आपको notifications मिलते रहे मैं जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूँ. ओके सो आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 3-in-1 मास्क, हेडबैंड एंड नेक स्कार्फ. स्पेशली ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो हमारा पीरियड है, दैट इज लाइक वी ऑल हैव टू वेयर मास्क ऑल द टाइम. अगर आप ऑफिस में जाते हैं और मास्क यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स विच इज़ अ कंपल्शन नाउअडेज, तो जब भी आपको कुछ खाना होता है यू हैव टू रिमूव योर मास्क एंड देन यू आर ईटिंग. मतलब बहुत इनकन्वीनियंट होता है. सो आई एम हेयर विथ अ वेरी क्विकेस्ट थिंग जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी बार बार मास्क को रिमूव करके रखने में, एंड you have to wear it again, so it won't be very hectic and or hustle bustle. And the interesting thing is I made it from old top. It was almost waste for me because I was not wearing it since last I don't know how many years long. So all you need is a stretchable fabric. So I'm going to show you a quickest and simplest way. I'll show the making of it later on, but first what do you have to do for this? Just taking it, and it is so simple to carry. You can just wear it like this and it's mask. It is so simple to wear it like a mask, and yet it will look very cool and stylish. Simply put it down and make it a scarf. और ये मेरे टॉप के साथ भी मैच कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू मेक अ नेक स्कार्फ, एंड आई जस्ट सिंपली put it like this, and it's a headband, and here it goes. When you are going to watch the DIY of its making, then you will be like, what? Was it that simple? Okay, so to begin with the DIY process, let's directly dive into the video. सबसे पहले आपको एक स्ट्रेचेबल टॉप लेना है. अगर आपके पास स्ट्रेचेबल टॉप रीयूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो टेक स्ट्रेचेबल फैब्रिक. और अगर टॉप लिया है एंड उसका बॉटम ब्राउन है, देन कट इट इनटू अ स्ट्रेट लाइन. अब हम 10 इंचेस लेंथ मार्क करेंगे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टॉप, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसे कट कर लेंगे. और विड्थ के लिए मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मैंने फर्स्टली इसका विड्थ ज़्यादा ले लिया था, दैट्स वाई इट्स लुकिंग लाइक अ स्क्वायर, बट देन आई रियलाइज्ड कि इसका विड्थ ज़्यादा है, सो आई कट इट इनटू 9 इंचेस विड्थ. फर्दर ये आपके हेड के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, बट 9 इंचेस इज़ गुड इनफ टू गो इफ़ इट्स अ स्ट्रेचेबल फैब्रिक. बट एक बार के लिए आप 10 इंचेस भी रख सकते हैं. इन केस अगर वो लूज़ रहता है तो आप उसे फर्दर स्टिच करके छोटा कर सकते हैं. ओके, वंस डन, इसे आप फ्लिप कर दीजिए इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड स्टिच दिस वन साइड. एंड वंस आपने ये साइड स्टिच कर दिया, इसे फ्लिप कर दीजिए इनसाइड आउट, एंड इट इज़ ऑल रेडी टू वेयर. So that's it for today's video. I'll see you guys next time with a new thing. Till then, bye bye, take care.